My blender. What type of blender? This type. What were you doing with it? I was making mango juice. Mango shake? Yeah, Okay. it's a milkshake. Mango And shake. I'm looking at it and it feels so juicy. So, Ananya, why you so late today? इसके चक्कर में ये तो बाद में कर लेते. You could have done it Yeah, I started after the it class. mostly. I started right now. I forgot about the class and then I started it. Then your mother called you? Yeah, and reminded me. Then I logged in. Data handling continue करते हैं अनन्या. Fine. Okay. And there is no internet issue today, so I'm pretty sure that the class will go well. ठीक है. The class is till 6:30. Okay. 6:30? Of हाँ. course, it's Hmm. I'm not going down from now, no? Why? कोरोना? Pandemic. सब gardens बंद किए हमने. बंद कर दिए? हाँ, नाइट कर्फ्यू भी हो रहा है. अच्छा. आपके इधर नहीं हो रहा? No. I'm so excited to have it once. Ananya, don't do it. Let's do this fifth question. Read करो इसे. इसको हमें सर्कल जो ग्राफ है पाई चार्ट उसमें बनाना है. ठीक है? Read Okay, it. can I just let it blend because or else it won't work. I have to let Mute yourself then. Okay. Yeah, and I'll just keep this in the kitchen. Okay. As in, I'm done with a little more time. Okay, where do I read? Where do I Fifth read? question. Fifth question. 100 children of class V opted for various secular activities. ठीक है? Okay. Represent this information using the circle graph. Dance, musical dance, arts and craft. These are the same, art and art. आर्ट के इधर एक मार्शल आर्ट है. ये क्या है? फर्स्ट रीड ना, क्वेश्चन रीड करो ढंग से. Yeah, I understand. ऑप्टेड मतलब उन्होंने चूज करा है. 100 चिल्ड्रन ने फिफ्थ क्लास के चूज करा है डिफरेंट एक्टिविटीज. 25. ये आर्ट एंड मार्शल आर्ट क्या होता है अनन्या? मार्शल आर्ट नहीं, मार्शल आर्ट दूसरा होता है. आई शो यू. लाइक टाइकोंडो, जूडो, ऐसे करके. ये देखो ना, कराटे की तरह होता है मार्शल आर्ट. पर वो आर्ट्स अलग हो गया. आर्ट वो जो दूसरा वाला है, दैट इज फॉर ड्राइंग एंड क्राफ्ट, एंड इट इज फॉर लाइक ये जो फाइटिंग का है. ठीक है? यस. तो अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर ऐसे. ठीक है? रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सर्कल ग्राफ. तो इसे सर्कल ग्राफ में रिप्रेजेंट करो अनन्या. तो पहले स्टेप क्या होगा? आपको लिखना है म्यूजिक. यहाँ लिखना है म्यूजिक एंड डांस में कितने स्टूडेंट है? 25/100. सो अगर 25/100 को इफ वी डिवाइड, वी गेट 1/4 because 25 ones are 25, 25 fours are 100. That's why. ठीक है? अब सबका 1/4 हो गया, तो एक पाई चार्ट ले लेते हैं. इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 1/4, 1/4. Or I could make it easier. How? I could just 25 and 25. Half of 100 is 50. And ये ऐसा होगा 25. So the bigger part portion gets 50 and the smaller part gets
25. तो ये तो ठीक है, आपने कर दिया, आपने 25, बट ये तो 50, ये तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया ना, तो ये तो सूट ही नहीं कर रहा है। पर इसमें भी ये भी बहुत बड़ा पार्ट हो गया, तो इसमें से वो तो अनन्या ऐसे वो अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। जिस पार्ट मतलब जो छोटा पार्ट है मतलब छोटा एरिया, बट यहाँ सब इक्वल पार्ट के, तो इक्वल एरिया होना चाहिए। जैसे हॉकी में क्या है, हॉकी में सबसे ज्यादा पार्ट था, ठीक है, तो हॉकी ये में सबसे 50% है, ये 25. यस। वही तो बता रही हूँ, तो हॉकी में 50 आ जाएगा ना। नहीं, हॉकी वाला क्वेश्चन कौन कर रहा है अनन्या, वी आर डूइंग 5th क्वेश्चन। अब या क्या, बट वो तो यहाँ 25 देखो, इसको क्या करो, इसको इधर बनाओ अभी। कैसे बनाओगे 25 can I do 25? something? यस। Okay, so this is the circle. इसको 50 कर लिया, हाँ, ठीक है। और इसको आधा कर लो, 25. हाँ, ठीक है, सही है। ओके, बट यू ऑल्सो हैव टू नेम इट, किस किस का है। हाँ, इजी है। 25 and 25. तो म्यूजिक एंड डांस 25, मार्शल आर्ट्स 25 एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट 50. ऐसे बस एक एक लेटर लिख लो, अल्फाबेट लिख लो, ठीक है, स्टार्टिंग का। आर्ट्स एंड क्राफ्ट ए एंड सी लिख देना, ठीक है। ए एंड सी, नहीं, ए एन सी नहीं, ए एंड, ए एन डी। हाउ अबाउट एसी लिख दो। हाँ, ए सी लिख दो। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, मार्शल आर्ट्स, and music and dance, and you need to see म्यूजिक एंड डांस, ठीक है अनन्या। ओके, नाउ लेट्स डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 6th वाला, रीड इट। Okay, the adjoining of circle graph shows the number of different types of trees in the park. Read the graph and answer the following questions. इसको रीड करना और आंसर करना है। अच्छा, ए पार्ट रीड करो। The maximum number. Mango trees are the maximum number. नो, नीम नीम, नीम का ज्यादा है। हाँ, ये वाला ना। अच्छा, नेक्स्ट बी पार्ट। Which two types of the trees are equal number? Mango and oak are not equal. दे आर इक्वल। No, look, they don't have a straight line. Mango is a little bit lesser. नो, एक्चुअली दे आर इक्वल। वो लाइन ठीक नहीं है, बट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। सी पार्ट। See, which type of trees are maximum number? मिनिमम इन नंबर। Minimum in number. Yeah, I don't know. पाइन, ये सबसे ज्यादा कम है ना, पाइन ट्रीज। Okay. जीवन। Which type of trees are more in number than pine trees but less than mango? Ashoka. अशोका। Ashoka. It's not doing that. I can see. अशोका एंड ओक यू कैन डू। It's less than mango, na? हम्म How can I do oak? सो अशोका ही होगा। यस। व्हाई यू जूमिंग? Because I can't see hardly. अच्छा, ठीक है, लीव इट। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लाइन ग्राफ, रीड इट। लाइन ग्राफ क्या होता है? Okay. Line graphs are similar to bar graphs except for that 2 minutes. Yes.
Line graphs are similar to bar graphs except that we represent the data as points which are joined together to form a broken line. To form a broken line. Ananya, why are you using the blender? Mango juice. You told me मेरा हो गया बस. Yeah, now the ice is starting to melt so I can quickly do it. Last blend, mostly. Ananya, after 6:30 you can do. आइस को फ्रीजर में रख दो ना, फ्रीजर में खराब नहीं हो. Almost done, I promise you. It's 5 minutes से आगे एक 2 minute का blend and then forward. So do one thing, mute yourself. Okay. I'll read the question. The weather department recorded the speed of wind for a week. ठीक है, ये speed of wind है 40 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर, ये 100, 80, 50, ठीक है, अलग अलग है. What do the ups and downs in the graph show? ये कोई ऊपर जा रहा है, ये क्या है, ups and downs क्या है? It's the speed of the wind. ठीक है. Yes. When was the wind speed highest? Highest कब है, कौन से डे में? यहाँ से चेक हो जाएगा. Wednesday है ना, 100 पे. On which day was the wind most calm during the week? सबसे ज्यादा कम I know. शांत कौन से दिन थे, कौन से दिन? Tuesday. Yes. Yeah. Okay, read this question. This is fun. What is the difference between the highest and the lowest speed of wind? Now I'm up. Difference मतलब देखो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या थी 100, ठीक है, और सबसे ज्यादा लोएस्ट स्पीड क्या थी हमारी 10. तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना. 90 इज द डिफरेंस. Oh, that difference. I thought it Yeah. was Highest on Wednesday, lowest on Tuesday. 100 minus 90 is 100. minus What? 90 is equal to 10. इन्होंने गलत करा है. They wrote 90. Sorry. They wrote what? They wrote 90. उन्होंने इधर 100 minus 10 करना था. Their answer is weird. No, आंसर इज करेक्ट, बट उनको 100 minus 10 करना था, उनका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया. क्योंकि लोएस्ट ऑन ट्यूसडे को तो 10 हुआ था ना, उन्होंने इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 उन्होंने गलत. To 90. हाँ, 10 minus 90 तो 10 हुआ, बट स्टिल यहाँ 100 minus 10 होना था. ठीक है अनन्या, 100 minus 90 is equal to 90. वो गलत है. They learn. अगर किसी ने पूछा 100 minus 90 is equal to, बोलेंगे 90. नहीं अनन्या. They बुक don't में learn that simply. नहीं, बुक में मिस्टेक है. ओके, इट्स बुक्स मिस्टेक. 100 minus 10 is 90. ये होना है. Let's do this question. It is also 10. अभी इसको इरेज करते हैं और आप मुझे अभी शो करना, ठीक है? ग्रिड्स Mom, ग्रिड कर दिया. यस. just one thing I noticed right now. We said 100 minus 90 is equal to 10 and 100 minus 10 is equal to 90. Without addition, we're getting same numbers with same logic. Get it? Addition में usually होता है कि 100 plus 10 is equal to 90 and 90 minus 10 100 plus 10 is 110. No, as in 90 plus 10 is equal to 100 and 100 minus 10 is equal to 90. So 90 plus 10. So 10 आ रहा है मिडल में, but yeah, you get it. वैसे ही लॉजिक सेम यूज करना है. 100 minus 90 is equal to 10. नहीं, 100 minus 90 is equal to 10 and 100 minus 10 is equal to 90. You're getting the same logic without subtraction. Addition. Yes. Okay. देखो अनन्या, this question, read it. Surya Travels made bookings for the tours during the summer vacation. Show the data using a line graph. हाँ, अभी यहाँ आगरा के इसका लाइन ग्राफ बना हुआ अनन्या यहाँ पे. Now they don't have fun.
ये क्या कर रहे हो? What are you doing? Not this. I don't know how to make a line graph. नहीं, just do one thing. इसको wait, ऐसे नहीं करना अनन्या. You don't have to do like that. I don't know. It is. देखो पहले तो क्या करना है, लाइंस खींचनी है x and y एक्सिस की. कहाँ खींची? विदाउट लाइन, विदाउट नंबरिंग, कुछ भी कर वो भी दिया. करना आता है. हाँ, वो दैट इज इम्पोर्टेंट ना. भी इसमें सीधी लाइन खींचो. यू कैन यूज द टूल्स. Alright. इसको मैं 1 मिनट ओपन कर लेती हूँ ये वाला. 1 मिनट बस, जस्ट वेट. अब कर लो. No, it's not tools का. लाइन वाला. हाँ, स्ट्रेट लाइन बना तो उसके लिए जरूरत नहीं है. फिर इधर एक एरो. वेट. That's one way to make a line. इधर एक एरो. इधर एक एरो. ओके. 1 0 here. X Y. नहीं, X Y. हाँ, लिखो x and y. X. Wow, what are you doing? ये क्या बना है? Lizard? Y is looking like a wine glass to me. Y, wine glass. Nice. ठीक है, ओके. y बना दिया. अब इधर देखो, आपको क्या करना है. ये 8 13 16 14 26. अब इनका देखो, इनमें कितने कितने का नंबर्स का गैप करोगे. I don't know. इधर 6 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 8. 8 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 13. यू कैन डू वन थिंग. ठीक है. So it's आप 6, 8, 20, नहीं 16, 13, 14. नहीं, not like that. Can Do you- one thing. आप ऐसे कर लो. Since 8. I'm getting a message, can I just come in a second? What message? I don't know, I have to check it first. Ananya, during the class, what are you doing? I will take a second. I just take it. Bye. Still there. Seriously? Hello? What happened? Yeah. Yeah, the message was about a stupid ad. So why you were so excited about the message? No, I thought it was my mom. I get तो excited from message. I like messaging. तो आप क्या कर सकते हो अनन्या? 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसा का गैप करो. यहाँ पे बनाओ. ये y को हटाओ ऐसे. अब यहाँ से नंबरिंग करो. फ्रॉम 8 to 20. 2 का छोड़ना है आपको. Are you okay that मेरा mouse netting is really bad? Yes, it's fine. चलेगा. किधर तक डालना है? Like 20. each per grade. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So much better with a pencil. 7, 8, 9, 10, 11. बस ठीक है. लीव इट इतना काफी है. 13. 20 नहीं करना है. 20 नहीं करना है. यू हैव टू डू 8 10 देन 12 14 16 18 20. यहाँ पे फिनिश हो जाएगा आपका. करो.
8, 12. ये क्या है? What is this? ये क्या है? A. This is or any insect. I told you my mouse handwriting is Leave really it. bad. I am doing. क्या करे अनन्या? I don't know. पेपर में मत करना ऐसा. नहीं करूंगी. My real handwriting is so much better than why you saw. My mouse handwriting is extremely bad. Whiteboard में भी I try to practice, but it's horrible that I can't even look at it. किसकी handwriting? Your? Yeah, my mouse handwriting is extremely bad. They're super duper extremely bad. You probably. Now don't do anything, okay? I'm drawing. I won't. I'll just be waiting. Okay. How can I erase this? Like how to erase this? इसको extend करना है. How to extend? ठीक है, ऐसे कर देते हैं. This will be 16. This will be 18. And this will be 20. Okay. Let's see. अब तो आप करो. आगरा, केरला, राजस्थान, कोलकाता, कश्मीर, मुंबई. How Do can like you flip it on दूसरा side? It's really real good comedy. अब वैसे तो अनन्या इट्स ऑन द लेफ्ट साइड बट वो फिर यहाँ पे आ जाता ना, इसकी वजह से आई डिड ऑन हियर. ए वाला इधर कर दो. ए आगरा. केरला का के करना है. 1 minute. Where is my mouse? के का इधर. के केरला, Rajasthan for R. Kolkata is KO. Kashmir is KA. And Mumbai is M. अब इसे सॉल्व करो अनन्या. अब बार ग्राफ से. I don't know how to make a line graph. ओके. फर्स्ट वाला 8 आगरा पे. इधर एक पॉइंट कर दो. ठीक है. केरला इज 13. 13 और 12 और 14 के बीच में 13 आएगा ना. सो लेट्स डू हियर 13 का. ठीक है. अभी बस मैं इसको पॉइंट्स कर रही हूँ. राजस्थान है 16. राजस्थान है 16. ठीक है. कोलकाता है 14. कश्मीर इज 20. कश्मीर आगे इधर 20 पे. दिस पॉइंट. देन फिर मुंबई आ जाता है 6. 8 से भी छोटा है 6. तो यू कैन डू लाइक हियर. Okay. ठीक है. Yes. तो अब इनको कनेक्ट करना है. By the way, my milkshake's done. ओके. I'm gonna taste it later. इनको इसको बस कनेक्ट करना है. ठीक है. Yes. So it's done. जो पॉइंट्स है ऐसे करना आपको. नाउ यू हैव टू डू 8th क्वेश्चन. टेल मी. इसको तो सॉल्व नहीं करना है. जस्ट टेल मी. 8th क्वेश्चन रीड करो. कौन सा 8? हाँ. रीड करो. आई कांट हियर यू. Sorry. You didn't hear that, right? I can.
I know you're pouring out. No, I am not. I'm not pouring out. You'll understand later. During an indoor game period, the number of children who chose various games are shown in the following bar graph. By the way, it's charging right now. Answer the questions and you will fill the missing data in the table. How many children wanted to play Brain Vita? Brain Vita, Brain Vita. Seven children wanted to play Brain Vita. What was the game chosen by maximum children? Plot 4. ये मैक्सिमम चिल्ड्रन ने चूज करा है. हाँ, मतलब क्या हुआ? मतलब plot 4 is the game. How did you identify? Easy, the most जो लाइन से नीचे सबसे ज्यादा जाता है ना पॉइंट. That is the lowest. अनन्या, जो सबसे नीचे जाता है that is the lowest. तो इधर मैक्सिमम पूछ रहे हैं ना. कहाँ लिखा है मैक्सिमम? Lowest, right? मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है? लोएस्ट? हाँ. नो अनन्या, इट्स रॉन्ग. मैक्सिमम का मीनिंग होता है सबसे ज्यादा. मिनिमम का होता है लोएस्ट. तो टेबल टेनिस. टेबल टेनिस, यस. Which games were chosen by less than 10 students? So many except for the highest one. Seriously. हाँ. Okay, highest one is table tennis. हाँ, Ludo, उसके बाद तो chess, checkers, skating, plot 4, brain thingy, brain vita, tabola. Can't really see properly. It's so small. Like कोई बात. Okay, now the D part. How many children were given the choice? So have to add all of them. Great. Ludo. I'm gonna make it like that to add all. लिख लो कहीं ना व्हाइट बोर्ड पे ओवरऑल जो नंबर्स है. It's going to be a long process. 9, 9, 8, 9, 8, 5, 9, 8, 9, 8, 5, 9, 8, 5, 9, 8, 5, 11, 9, 8, 5, 11, 9, 8, 5, 11, 9, 8, 5, 11, 9, 8, 5, 6, 9, 8, 5, 11, 6, 9, 8, 5, 11, 6, 9, 8, 5, 11, 6, 9, 8, 5, 11, 6, 9, 8, 5, 11, 6, 9, 8, 5, 11, 6. Woo! 9, ये 8, क्या 5, कर रहा है? 6. क्या क्या किया? 2 मिनट. 9, 8, 5 को प्लस करोगे तो 11, 6 आएगा. नहीं. तो what you did? 4, 7, 4, 7, 8. 4, 7, 8. 4, 7, 8. Sorry. Nine. 6, 7, 8.
Okay, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58 is your answer? Yeah. Let me check. उसके दोबारा जाओ माईपीडिया पे. 58. There was the answer on. नहीं, there is no answer. 33 plus 39, 39 plus 4, Then 43, 43 plus 7, 50, 50. Your answer is 58. 58 is coming. Yes, your answer is correct. Okay. Hello, you were on mute. Your answer is correct, Ananya. Great. Good. Because the first thing I heard was that my answer was wrong. Ananya, your answer is wrong. No, yeah, Ananya, your answer is correct. Ananya, this chapter is finished. Maths complete. Yay. Can I have my mango juice? हाँ, but be in the class itself. ठीक है? Yeah. Maths का syllabus complete, English का complete. Okay. Let's see, science में. It pours like magic. Yeah, missing. Let me see, science में क्या topic रह रहा है आपका? Cleanliness and hygiene हो गया था. Yes. And Mama made it exactly like they make in the, those other places where they make. Okay, that's good. This just exactly like that. I'm saving some for my mom too. Okay, I think cleanliness और hygiene में थोड़ा बहुत part रह गया है. हाँ. Let me see. Data presentation हो गया. That means पूरा maths का हो गया. Yes. And this is I'm celebrating victory. आज शायद हम इसका भी finish कर देंगे science का. Okay. तो English, science और maths खत्म हो जाएगा. Okay. Ma'am, may I ask if I may use paper to make a straw? Will it occur like those other paper straws? Will it be poisonous? No. Let's see. So I can have it. How to make a straw from a paper. Oh, I said. Yes, people made it. See? I think it's also drinkable. Usable. You can use it. Yes. That's great because I don't have any straws. But I'm not putting color wala. I'm just putting a plain one. Okay, that's fine. अनन्या हमारा ये हो गया था waste disposal. ये हो गया था. Today we have to do from here due to moderation. ठीक है? This thing I'll read this page, next page you read, okay? Great. Due to moderation, there is an increase in the use of human-made May I mute?
but if I'll ask you the question, you have to say. ठीक है? Yes, can I just drink water so you can stop for a second? Yes. Yay. I'm not muting. Okay, I'm ready. Yes. Due to modernization. I won't mute. Okay. There is an increase in the use of human-made non-biodegradable products. This you were talking to me about paper straws. ये भी human-made non-biodegradable ये Non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं सॉरी ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं आइटम्स जैसे प्लास्टिक हो गया मतलब दैट कैन नॉट गो इन द सॉइल और वो डिसॉल्व हो जाए अपने आप जर्म्स खा ले उन्हें मतलब जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं दे कैन ईट इट नो प्लास्टिक कैन नॉट ठीक है बट अगर आप एक have poison in their tummies. हाँ हाँ यस बट क्या है कि अगर इफ यू टॉक अबाउट वाटर या फिर वाटर नहीं या फिर वेजिटेबल पील्स या फिर पेपर ये सारे जो होते हैं दैट कैन इजीली बी डिसॉल्व इन द मतलब डिसॉल्व क्या है वो Vegetable peels से you can make a great artwork. तो वो ऐसे अपने आप एनवायरनमेंट में सॉइल में चले जाते हैं ठीक है और उसके कोई बैड इफेक्ट नहीं होते बायोडिग्रेडेबल के Good. तो अभी दे आर सेइंग दैट नाउअडेज इंक्रीज हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं है ना जो जैसे फोन्स हो गए लैपटॉप हो गए दैट कैन नॉट बी मतलब दैट कैन नॉट बी कंपोज बाय इटसेल्फ अपने आप नहीं जाएगा ये सॉइल में या फिर इसको रिसाइकल करने में बहुत टाइम लगेगा है ना It has become a major concern to dispose these products after using them. In this manner, the harmful effects caused by them can be minimized. The first step to dispose of waste is waste segregation. Segregation मतलब waste को कम करने को segregation ठीक है You must have seen dustbins of green and blue colors in metropolitan city. At places such as airports and metro station, blue और green color के dustbin देखे होंगे अनंदा. The green color dustbin is used to collect. Can I just search for a second? Green Yes. and blue. Yeah. Yeah. So. Yeah, I found them. You found it? Yeah. Green stands for nature wala and the blue one stands for technology wala plastic. हाँ उसमें लिखा है ना the green colored dustbin is used to collect biodegradable जैसे vegetable peels, leftover food है ना और दूसरा जो blue colored होता है dustbin it is we use it for throwing जैसे कैन हो गया कोई अपने कोक पिया उसका कैन फेंकने के लिए या फिर ग्लास प्लास्टिक चिप्स का पैकेट ओके दैट वी थ्रो इन ब्लू कलर्ड बट अगर आपने एप्पल खाया ठीक है उसके बाद आपको यू वांट टू थ्रो इट देन यू विल थ्रो इन द ग्रीन वन ठीक है Yeah, and they put it for the plants, right? हाँ yes Care should be taken while segregating the two types of waste. It is our responsibility to throw the biodegradable and non-biodegradable waste in separate bins. ये हमारी responsibility है ना? We are responsible. We can contribute in keeping the environment clean by properly disposing waste. ठीक है If you suppose if you are throwing the waste अगर आप green bin में आप plastic फेंक रहे हो so do you think it's good? No. That is really bad. मतलब you're like illiterate if you're doing that, you know. The meaning is you don't know. The person doesn't know if the person is throwing any plastic in the green bin. Yes? Yeah, that's bad. Very bad. Pretty bad. Waste management. Waste का कैसे manage करें?
ठीक है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट. ठीक है. Yes. Thus, it is necessary to minimize the generation of waste. As the population is increasing, the amount of waste generated is also increasing. आपने देखा होगा like near your home or like you must have seen beaches, है ना? उसमें देखा होगा कि वहाँ पे लोग they eat something and they throw that in the beach. वहाँ पे, है ना? That's extremely bad because it causes a lot of problems on beaches. हाँ, तो फिर how we can reduce it? Once a person was hospitalized. So see how we can significantly reduce waste generation by practicing the 3 R's. 3 R's क्या है? Oh, I know. I know. I always studied it. Reduce, reuse, and recycle. हाँ, reduce, reuse and recycle. चलो इसके बारे में अभी नहीं पढ़ते, just discuss करते हैं, ठीक है? कि reduce का मतलब क्या होता है? Let's just so jute bags if they are like biodegradable or not. I want to know the answer by myself once. A big para. Okay. I found it. Okay, I was saying reduce. ठीक है? Reduce. अगर if you are going to a mall and you are carrying a paper bag or any jute bag with you and going to a mall with it, so it's better than you have reduced the usage of using the plastic bag. नहीं तो अगर आप मॉल जाओगे, most of the shops like आजकल तो ये हो गया कि आपको पेपर बैग ही मिलते हैं, ठीक है? बट अगर आप वेजिटेबल वेंडर के पास जाओगे तो वहाँ पे तो you get plastic के polythene you will get, no? So it's better to keep your own bag. तो आपने क्या करा इधर? Reduce, reuse. Second point is my mom also does the same thing, takes her own bag. हाँ, that's good, no? So let's read. You know those paper bags that they gave away just like that? Yeah. That's my mom. Okay, that's good. Let's read about reduce. Reducing waste means generating as little waste as possible. Wise and limited use of available resources helps us to reduce the need for more products. Using fewer products means producing less waste. ठीक है, अगर जितने कम प्रोडक्ट यूज करेंगे जैसे प्लास्टिक का या फिर किसी और चीज का, इट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट. ठीक है? Okay. We should carry both cloth or jute bags instead of asking for new polythene bags every time while shopping. मैंने बोला ना, you should use your own bags. अपने बैग ले जाओ, हर टाइम दूसरों के से मांगने के बजाय. Just go and carry your own bag. यहाँ से रीड करो अनन्या. Just this page is left and then then it is over. ये भी ओवर हो जाएगा, साइंस का टॉपिक खत्म. ठीक है? Everything is going great, huh? Yeah. Yes. So read from here. We should whereas we should exactly, screen is a little blurry, so that's a problem. I have highlighted we should. We should use cloth, napkins, or handkerchiefs instead of using despicable only. Disposable ones. Okay, disposable ones, sorry. Okay. Read. Thrashing away polythene bags and using Throwing away polythene bags napkins unnecessary. is the amount of waste generated in our environment. अब अगर without reason you are throwing the garbage or throwing the polythene anywhere, so you are increasing the waste. But if you reduce it, like if you yes, if you'll not use it, if you'll not throw it and use it, it will help in decreasing the waste.
Okay. Yes. Now read reuse. reuse को read करो. Okay. What happened? It's not clear? No. No. Okay. Just all paper have. Reuse. Reusing means using certain things more than once and for more than one purpose. ठीक है. एक चीज को reuse मतलब if I'm using something, आप भी देखो, you अगर you have a phone, suppose you have a phone, so Yeah, what do you think? So you're reusing your phone or you're just using and throwing it away? I'm reusing it. Yes. So if you're using one thing more than once, so that is using that means the meaning is reusing. Reusing an item instead of throwing it away can significantly decrease the amount of waste produced by us. Okay. That suppose you have used a plastic bottle, you got a Coke from a market. ठीक है, you got a Coke और Coke की you got a bottle इतनी बड़ी सी. ठीक है. So instead of throwing it away, you can do one thing. You can put water in that and you can reuse it. है ना? Yeah. So it will be good. You're not Yeah. throwing it Like away. that instead. Yeah. So some things such as pens, cans, and utensils can be reused. We can reuse empty soft drink cans as pen stands by carefully cutting them open. देखो, आपने देखा होगा ना कि that in YouTube also you must have seen some videos that people are making things from a can and bottle. उसका बहुत craft करते हैं, art and craft, है ना? Empty jars of jams can be used as storage containers to keep things in the kitchen. Reusing things prevents us from acquiring additional things, which in turn helps to reduce waste generation. ठीक है. तो अगर आप बार बार if you're using something again and again, so that's good. You're helping in reduce the waste generation. Yes. Okay. So you give me one example of reuse. What thing we can reuse and what? Plastic Huh, bottle. plastic. This is the example that I already gave. You tell me. Paper. Paper का कैसे? As in, if you have got a document that you want to throw, you can make a paper aeroplane out of it. पेपर को थ्रो नहीं करना है. Let's read what we can do with paper. Recycle. Recycling means making new products by processing waste materials. All waste materials cannot be reused, so they end up as waste. ठीक है? Yes. However, development in technology has enabled us to recycle most of the waste materials into completely different products. देखो क्या होता है, like where I used to live, so I used to give all of my newspapers and papers to one I don't know, I don't remember the name, but I used to give it to some person, and the person used to recycle all those papers. And then if you buy a notebook for like you can buy a notebook and that notebook is made up of recycled pages. ठीक है. वो notebook specially, and that is really very cheap. You can get it for like around 10 to 12 rupees. वो notebook, it has around 40 to 50 pages. ठीक है. And that is made up of recycled papers. Oh my gosh, that's actually brilliant. Yes. However, ये हो गया. Such process help us to save a large amount of energy required to make new products and minimize the harmful impact of waste on environment. Okay. For example, plastic bottle example, empty mineral water bottles can be recycled to make different things such as comb, boxes and pens or pens. क्या होता है, अब देखो ये जो प्लास्टिक ऐसे बॉटल्स है, इसको आप चेंज कर सकते हो इनकी शेप्स. तो we cannot do it by our own, but we have, like, people have companies, they have some technology
that they can change it into comb, boxes or pens, है ना? Yes. उसका प्लास्टिक And बार ma'am, बार रिसाइकिल करके. Yes. yeah, but ma'am, look at the time. Yes, just give me 2 minutes. I'll be Yeah, completing take this your topic. time, but you didn't even understand कैसे time गया ना? हाँ, topic is interesting, no? It just went past, and God knows only God, Yes. nobody else. Another commonly used item which can be easily recycled is paper. All newspapers which are, मैंने बताया ना, all newspapers which are normally disposed of are used to make paper packets, gift I wrappers, just gave example of paper, right? and newsprint. So Ananya, this chapter is finished. Next class में कुछ और करेंगे, ठीक है? हिंदी करेंगे most Great. No. probably. Okay then, bye bye. Bye.